also it's a very entertaining. Not like esports, we have the real thing. We can learn about the drones, and we can also have a drone as a method of playing a game. And also, one of the special point of the drone soccer, you need a team play. You need a teamwork to be a good team, a top level team, and it's like order free, age free, regardless of who you are, maybe uncomfortable, disabled, woman, man, all seniors, everyone can compete equally. So that's also one of the merits, good points that drone soccer is. So I hope that drone soccer will promote in India. I think so, and I expect that there will be many good teams because in Japan, United States, China, also there are many teams. I hope that there will be also many good teams from India, and next year in World Cup, I wish the India team will make a good result in the World Cup. Sadhji, lots of thanks to give this type of opportunity. No problem. To all the world. And lots of information you sharing the all persons. Okay. And you say something about in this regard to all over the world. Yeah. So I'm glad to be here in India to introduce drone soccer, and I wish that drone soccer can be promoted and get popular in India. And we are an organization which try to use drones for the peace. Okay, so we also pursue the world peace. Thank you very much. Thank you, regards. Thank you. Thank you very much. नमस्कार दोस्तों, हमारे साथ चिराग शर्मा जी हैं, CEO, और ड्रोन डेस्टिनेशन को लेके यहाँ पर हैच एवरीथिंग ड्रोन्स। बहुत अच्छी बात है कि आपने इस तरह का प्लेटफार्म जो है आम जनता के लिए दिया है, पूरे वर्ल्ड से जिस तरह से अभी सर ने भी कहा, बहुत अच्छी बात है। लेकिन जिस तरह से इसमें बॉर्डर में अगर किसी के पास ड्रोन है 2 किलोमीटर पहले और बॉर्डर में वो कुछ हैकिंग या कुछ इस तरह से बॉर्डर में आर पार करने की कोशिश करेगा, तो उसको कैसे एनालाइज किया जाएगा? ये तो दिक्कत आती भी है, हर दिन ही पुलिस या हमारी बॉर्डर सिक्योरिटी पकड़ती है ऐसे ड्रोन्स, चाहे कभी BSF पकड़ती है वही बॉर्डर से, तो कभी वो ड्रोन, कभी ड्रग्स पकड़े जा रहे हैं, कभी वो गन्स आ रही हैं, तो अभी एंटी ड्रोन सोल्यूशंस भी आ रहे हैं उसको जैम करने के लिए, काउंटर करने के लिए। कई बार तो वो गन से ही उसको डाउन करने की कोशिश करी जाती है, तो हो भी जाता है। बट क्या है, वो 20-30 सेकंड में भी इतनी जल्दी फ्लाइट कर जाता है कि कभी कभी आपको रिएक्शन टाइम कम मिलता है। तो ये तो वो है कि मतलब इट इज़ मोर ऑफ अ अनअवॉइडेबल इविल। इसको जितना कोशिश करके आप इसको रोक लें, काउंटर ड्रोन्स की बहुत अच्छी टेक्नोलॉजी आ रही है जहाँ पर रिएक्शन टाइम ज़्यादा रहे। जैसे ही वो डिटेक्ट करता है अपने रेडार में, वो तुरंत उसकी बेसिकली सिग्नल्स रहते हैं, उनको जैम कर देता है। तो एक बॉर्डर में इस तरह से भी एक कोई चीज़ लगाई जाए डिटेक्ट करने के लिए, जिससे जो है उस एरिया में ड्रोन का पता चल जाए और इमीडिएटली उस पर रेस्क्यू किया जाए। तो ऐसे उनके बहुत एंटी ड्रोन के बहुत तरीके के सोल्यूशन होते हैं। कुछों को जैमर सोल्यूशन बोलते हैं, कुछों में बोला जाता है कि दूसरा ड्रोन भेज दिया जाता है उसके ऊपर नेट लगाने के लिए कि वो आगे ना जा सके। ऐसे भिन्न भिन्न प्रकार के हैं, कंट्रीज काम कर रही हैं, इंडिया भी काम कर रही है, पर अभी कोई फुल प्रूफ नहीं हुआ। तो ये तो डिसएडवांटेज थी, लेकिन एडवांटेज बहुत ज़्यादा है। उस समय हमने 2-3 साल पहले या कि हर बार प्रोग्राम में वहाँ पानी का छिड़काव के लिए वहाँ डेमो चला ही रहता है। हालांकि पिछले दिनों प्रधानमंत्री मोदी जी भी वहाँ गए थे, उन्होंने भी ड्रोन दीदियों के साथ बिल्कुल और PhD चैम्बर में आप खुद आए थे, वहाँ कितना 2 दिन का एक्सपो टाइप लग गया था कि लोग बहुत से आए, बच्चे आए, उन्होंने इसको देखा। और ये बहुत अच्छी बात है कि हम भारतवर्ष में इसको लाके और बहुत अच्छे तरीके से आम जनता के लिए, फ्यूचर के लिए, तो इसमें खास बातें क्या हैं जिससे जो है, क्या इसमें आत्मनिर्भरता है, क्या कोई इसमें जॉब कर सकता है, क्या वो इस तरह से जो है इस पर डिपेंड रह सकता है? देखिए, तो इसमें अगर हम बात करें ना, तो ड्रोन इंडस्ट्री का 3 या 4 तरीके की टाइप की नौकरियों या सेक्टर्स पैदा होंगे। मैन्युफैक्चरिंग वाली साइड की अगर हम बात करें, तो हम जैसे सॉफ्टवेयर की कंपनी, सॉफ्टवेयर हमें आता है, इंडियंस मशहूर हैं सॉफ्टवेयर के, ड्रोन के भी सॉफ्टवेयर बनेंगे, तो उसमें एक नए तरीके की जॉब्स आएंगी। पर मैन्युफैक्चरिंग की साइड पे वो डिज़ाइन करना, उसका एयरफ्रेम कैसे डिज़ाइन करते हैं, उसके कंपोनेंट्स को कैसे बनाते हैं, उनको टेस्ट करना,
उसको लैब्स में जाकर लेके जाकर उसको फाइनली सर्टिफिकेशन लेके आना। तो इन सब में भी अगर आप देखिए मैन्युफैक्चरिंग साइड पे ये सारी जॉब रोल्स होती हैं जो ड्रोन बनाने के टाइम पे काम आती है। उसके बाद में आता है ऑपरेशन से काम। अब आपको ड्रोन तो बन गया है, अब इसको फील्ड में जाना है, काम करना है। तो आप किसान ड्रोन पायलट बन रहे हैं तो आपको ना सिर्फ लाइसेंस ट्रेनिंग लेनी पड़ेगी पर फिर एग्रीकल्चर ड्रोन पे भी लेनी पड़ेगी। आप सर्वे करना चाहते हैं तो आपको सिर्फ बेसिक लाइसेंस, गाड़ी तो आ गई पर अब गाड़ी के बाद मुझे फरारी चलानी है या मुझे ट्रक चलाना है या मुझे क्या है, तो उसके लिए उस तरीके की एप्लीकेशन ड्रोन के लिए भी अलग अलग एप्लीकेशन के लिए अलग ट्रेनिंग लेनी पड़ेगी और उस हिसाब से का पायलट बनेगा। पायलट के लिए कभी कभी सपोर्ट पायलट भी चाहिए था, को पायलट जिसको बोलते हैं। फील्ड पे चले गए, ड्रोन्स ख़राब होने शुरू हुए, अब क्या करें? तो उसको मेंटेन करना, रिपेयर करना और टेक्नीशियन आएंगे जैसे गाड़ियों के आते हैं, तो एक वो हो गया। अब ये जो ड्रोन है इतना सारा डेटा लेके आ रहा है, अब इतने सारे डेटा जो ड्रोन लेके आ रहा है उसमें आप देखिए उस डेटा का करेंगे क्या? उसको एनालाइज करना चाहिए, उससे कुछ हमें रिपोर्ट्स निकालनी चाहिए, कुछ आउटपुट तो देंगे हम। अगर आउटपुट नहीं देंगे तो उस डेटा का फ़ायदा ही नहीं है, वो ऐसे ही पड़ा है। तो उसके लिए फिर एक नया स्किल सेट आता है लोगों का जो ये डेटा ड्रोन के को एनालाइज करेंगे, उससे रिपोर्ट्स बनाएंगे, इनसाइट बताएंगे। हम सब एआई बात करते हैं, यही वो डेटा है जो एआई को पॉसिबल कर पाएगा, क्योंकि ड्रोन इतना डेटा लेता है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बनाने के लिए जो डेटा चाहिए वो ड्रोन का डेटा देता जाएगा और आपके लिए एक बिल्कुल नए तरीके की नौकरियां लगनी शुरू हो जाएगी। कहने का मतलब कि बहुत बड़ा सेक्टर उभर के आ रहा है, बिल्कुल, और इसमें भी जॉब्स के चांस हैं, और जो बच्चे बेरोजगार हैं उनके लिए बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है इमीडिएटली। बिल्कुल, और पायलट बनने के लिए आपको सिर्फ 10वीं पास होना और 18 साल की उम्र है, बस इतना ही आपको ड्रोन पायलट बन सकते हैं। तो ये तो बहुत अच्छी तो आप बात सोच के है। देखिए कि कितने लोगों का भला हो सकता है और 20,000 रुपये की नौकरी शुरू हो जा रही है ड्रोन पायलट। तो इसके लिए जो है आपसे तो इमीडिएटली कांटेक्ट किया जाए जो भी बच्चे हैं। बिल्कुल। तो चिराग शर्मा जी से आप मिल सकते हैं, का नंबर जो है आपको डिस्प्ले में दे दिया जाएगा। सर, जो नई जनरेशन है बच्चे, उनके लिए एक मैसेज दे दो सर, जो अपना भविष्य तलाश रहे हैं नई जॉब के लिए। नई जनरेशन को मैं मैसेज ये दूंगा कि आप फियरलेसली सोचें, डरें मत, मतलब, और जो भी आपको अपनी लाइफ में आगे काम करना है, बढ़ना है, उसको बेहिचके करें। मतलब डोंट हेजिटेट। वो पुराना मॉडल चला गया जहाँ बस आप इंजीनियर बनना, डॉक्टर, अब ऐसी बहुत सारी जॉब रोल्स भी आएंगे, ऐसे काम भी आएंगे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की जर्नी में, जहाँ आपको खुद को इम्प्रोवाइज़ करना होगा ताकि आप हमेशा कंप्यूटर से आगे रहें। तो नई जनरेशन को मैं ज़रूर दूंगा कि थोड़ा टेक्नोलॉजी का बेंट रखें, सभी के पास आना चाहिए। और ड्रोन ऐसा सेक्टर है जहाँ पर नई जनरेशन को फील्ड पे बहुत सारे मौके मिलेंगे काम करने के। तो जहाँ सब आईटी और जितनी पूरी हमारी वर्कफोर्स है वो कंप्यूटर के पीछे रहती है, ये वो सेक्टर है जो लोगों को वापस फील्ड पे उतारेगा। तो आई थिंक दिस इज़ अ न्यू करियर ऑप्शन फॉर पीपल हु लव आउटडोर्स ऑल्सो, बिकॉज यहाँ पे काम सारा बाहर हो रहा है कंप्यूटर के आगे। जी, तो सर जी बहुत बहुत धन्यवाद, आप यहाँ इस तरह से इन्फॉर्मेशन आपने दी, और रिगार्ड्स सर कि इस तरह से अपॉर्चुनिटी आप दे रहे हैं। थैंक यू सर। थैंक यू। So we provide such training at 12 locations. If you want to become a licensed pilot, you can sign up for a 5-day program which comprises of theory, flight simulator classes and flying classes. Once you go through all these checks, then you become a licensed pilot. So that is on the skilling side. But outside of being a licensed pilot, now which application do you want to pursue? Which career do you want to? Do you want to go into oil and pipeline gas inspection, power line inspection? Do you want to go into survey? Do you want to go into agriculture? Then you have to do application-based training also. And if you're not interested in going on field, then we also provide training to how do you maintain drones, how do you build drones, how to repair drones, or drone technician courses. So these come under the skilling umbrella, which is a program called Drone Kaushal for us. And we have Drone Shiksha, which is an education initiative targeting schools and colleges. There we teach kids to make drones, code, do coding on them, and then eventually fly them. So how many locations you are doing this? We are in the skilling space. We're in 12 locations, 12 cities at the moment, going up to about 26 cities in the end of this year. And on the education front, we're just starting, so we're talking to some large institutional school chains who want to adopt this program as part of their curriculum. So we're just working around that so we can do a rapid launch. So we have heard that you are working in agriculture sector. So how many different sectors you are in? So currently, from the service part, we are focused on two predominant sectors. In fact, three. So one of them is on the survey side. So we on survey mapping. So we work with GIS companies to execute projects for Survey of India, where we do land mapping. And then in Swamitva scheme, you basically, the drones are used to create maps which eventually get converted into property cards.
So that's one of the work that we do on the survey side. We're starting off with urban mapping also. This Swamitva is all rural mapping. Urban mapping is coming up next, Which is emerging now. which is emerging now. This will also have 3D modeling. So far it was 2D data. Then we'll be targeting, and through that agriculture side, we'll also be looking at working with insurance companies, especially when there are crop health, damages that the farmers give, Yeah. and insurance find it difficult to settle claims. So we are going to be helping insurance companies also, because drones will help in evidence-based management, right? They'll be able to give real-time geotag coordinates of what's the actual issue, so that the insurance companies also, if they find that the case is fair, they can settle quickly as well. Are into an end-to-end ecosystem. There are other countries who are asking us to come outside and help them start this service project also, especially on the agriculture front. We had some pilots who trained with us who are now serving in armies of some other countries as well. Yeah, so it's a huge So scope. any ideal destination you thought? No, so what we're doing is we're identifying mostly MENA, Middle East and Middle North and East, African yeah, North countries, and- because that is where they need the drones. We're not going in developed countries. We're going in developing countries like, even in our borders, South in Asia. Bangladesh, South Asia, yeah. So those countries, because there the adoption rate is higher in comparison to other bigger countries. Yeah. Okay, thank you. Thank you. What's the third vertical? So see, manufacturing we don't talk about another thing. So far we've been a purely training and service company, and largely training for us is also part of services only. It's one type of service, right? So if we look at it from a broad spectrum, then it's 100% service business, because training is also service for us. But if we kind of go a bit deeper, then it's roughly about 50-50. But as we progress, slowly this will transition to about 30-70, maybe 20-80, with 80 towards services. 80 being Yeah, services. services would now include, not just your not just your operational services, but your maintenance, repairs, Okay. all those other support functions as well. Yeah. Comment on the structure too much today, but anyways, I mean, whatever it's going to be is going to be for all this, because you have to ramp up pretty quickly.